Yeah. So while we talked about resistance being there, and we talked about how arrangement of circuit components or different components, how they resist flow of current and everything. And resistance is basically a good thing in a way that it allows us to convert electrical energy into other forms. Like through resistance, we take electrical energy, converted to heat, converted to sound, converted to motion, all those things that we make electricity do, they are all due to resistance of stuff. But how is resistance related to actual physical uh, component that we have, or the wires in which current flows, usse kaise uska relation hai? So for that, let's go back to the example of a road. And now I'm going to ask you to think of yourself as the driver of a car that you're moving around, and the journey that you have to take, how tired that journey makes you at the end. That's a resistance. Like that is what will decide कि आप उस journey पे जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे. So here's the thing. If the journey is really long, would you be more inclined to go or would you be less inclined? Like the longer the journey is, most people will probably avoid taking the driving seat, right? For shorter journeys, it doesn't matter. You're the only one who's traveling. So, but for longer journeys, the length is directly related to the resistance that you have. Like, मैंने नहीं जाना, इतनी दूर है. It's a common thing. Similarly, if you think about the road quality, if the road is of good quality, then you don't mind as much. But if the road is bad, rasta bahut kharab hai, then it's likely that many people will avoid taking that route. So that's again resistance directly related to resistivity. This weird P is resistivity. So for good materials, resistivity is basically low, and for bad materials like bad conductors and everything, they have a high resistivity. So जितनी ज़्यादा रोड होगी, like length कितनी ज़्यादा है जर्नी की, या quality of road कितनी बुरी है, that is going to tell us resistance. And lastly, खुली सड़क है कि तंग सड़क है, आपको रश में फंसना पड़ेगा या नहीं फंसना पड़ेगा, that has an inverse relation. अगर खुली सड़क है, कंफर्टेबल जाना है, तो you'll still be like अच्छा ठीक है. But if road, if there's too much rush, it's rush hour or something like that, you will avoid taking that journey or going on that journey. And that I'm going to call the cross-sectional area of the road, कि चौड़ी है या पतली है. And if I combine all of them, I get to my idea of what resistance depends on. It's a raw L over A. If I were to now switch or substitute you, yeah, it is still has to bumps the road, honestly. Yeah, especially these days. Yes. So the resistance of the charge to go in on that journey through the wire, these three factors are the physical manifestations of that. So if the path is long for the wire, it will automatically increase the resistance that it faces. And the quality of wire, that is the resistivity, and it depends on the material that you have. So every material has a different resistivity based on how much it resists. And then you have cross-section area. If you have a wider cross-section area or a higher cross-section area, then more charges can flow without having to collide with each other and all that. So that's a good thing. That reduces the resistance. But if you have narrow wire or wire with small cross-section area, then it will be difficult for the same charge to flow in there, which is why the higher the quality of wire that you see, or the higher the requirement of current, the wider the wire is. So for example, अगर आप घर में AC की वायर को कंपेयर करो अपने फोन की चार्जिंग वायर से, तो आपको नजर आएगा कि AC की वायर बहुत मोटी होती है, because we want to give it a large cross section area so the resistance is less. Similarly, we try to keep wires small in length. So आपको usually फोन की जो वायर आती है, जो आम चार्जर की वायर होती है, वो हम पतली रखते हैं. अगर वो ज्यादा लंबी रखें, ऑल्दो इतनी ज्यादा लंबी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यूजुअली 1 और 2 मीटर्स तक हम रखते हैं उसको. जो 6 मीटर्स तक की वायर्स आती हैं, जो आती हैं फॉर सम रीजन, you need a really good charger with that, otherwise the charger will get hot really fast, because बहुत सारी हीट एनर्जी में वो लॉस कर रहा है एनर्जी को, और आपका फोन स्लोली चार्ज होगा क्योंकि उसको बहुत कम एनर्जी मिल रही है.
Now, on small distances, it doesn't matter as much. So, for example, if you're just talking about small distances, like अपने घर में phone को charge करना and all that, current भी थोड़ा सा है और distance भी थोड़ा सा है, it doesn't matter. But imagine we are transporting energy from Tarbela Dam to Lahore, 700-800 किलोमीटर का distance है. This will matter a lot. If you try to take a wider wire, तो उसमें challenges उसके अपने हैं कि first of all material बहुत ज़्यादा लगेगा, महंगी हो जाएगी तार. Secondly, overhead cables can get really heavy if they're wider in cross section. तो उस वजह से क्या होता है कि वो सैग करती है, सैग करेगी, आंधी आई टूट सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. तो एक वो इशू है कि अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं कर सकते पूरे 700 किलोमीटर में. तो व्हाट डू वी डू? अब लेंथ को भी चेंज नहीं कर सकते. ये तो हो नहीं सकता कि तरबेला थोड़ा सा हम करीब ले आए लाहौर के, या लाहौर को कहें चलो मूव करो जरा इस्लामाबाद के पास चल जाओ. वी कांट. सो व्हाट डू वी डू? लेंथ वी कैन नॉट चेंज. एरिया हैज दिस प्रॉब्लम विद कॉस्ट कि हैवी हो जाएगा, प्रोन टू एक्सीडेंट हो जाएगा, चोरी हो जाएगा. ठीक है. सो वी talk about resistivity, then we go for pure copper if we can, but pure copper can be quite expensive and heavy. तो हम फिर एल्यूमिनियम को उसमें मिक्स करते हैं और हम वायर्स का एक एलॉय यूज करते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी काफी लो होती है, और that allows us to transfer energy from there to here. But there's also one other consideration that we take whenever we are transferring energy. Sure, resistance is there, but there's something else, and that is resistance in the power loss that we get due to resistance. So power hoti kya hai? Power is basically the energy per unit time. अब energy कौन लेके आता है? Charge. और charge flow कैसे करता है? Charge per unit time होता है. So that is again power, right? Energy over charge is transferred and charge move करता है. So this becomes power is voltage times current. Now here's the thing. Your power loss is basically dependent on I square R. Okay? That's the power loss. Every time you think of loss of power as energy is transferred, that is dependent on two factors, not voltage as much, but on current. And current के साथ उसका square का relation होता है कि अगर current double करोगे आप तो 4 times loss होएगा, अगर current triple करोगे तो 9 times loss होएगा. ठीक है. Similarly with resistance का linear relation है कि अगर आप resistance double कर रहे हो तो power loss भी double हो जाएगा, which makes sense. So what do we do? Whenever we are transferring, we try to keep current minimum. हम कहते हैं current कम से कम रखो, क्योंकि अगर आप current को half कर दोगे ना तो आपका power loss quarter हो जाएगा. अगर आप करंट को 1/3 कर दोगे तो आपका पावर लॉस 1/9 हो जाएगा, which is really good, which is excellent. So what we do is we try to cut our current in smaller quantities. And what do we do? हम पावर वोल्टेज के थ्रू देते हैं. हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, and this is important, voltage and current together work on this, right? So अगर हम करंट को कम करें तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि reduce the number of charges flowing per unit time. Okay? सो हम चार्जेस कम कर देते हैं. हम कहते हैं जी ये चार्ज जा रहा है, इसको कम कर दो. ये अगर 1 सेकंड में 1000 चार्जेस जा रहे हैं तो अब इनको 500 कर दो. ओके कर दिया. बट द प्रॉब्लम इज चार्जेस वर कैरिंग एनर्जी. सो वो कहते हैं कि बजाय इसके चार्ज तो कैरी करता है ना, तो रादर देन हैविंग मोर चार्जेस फ्लोइंग, गिव वन चार्ज मोर एनर्जी. सो पहले अगर हर चार्ज को हमने 2 जूल्स एनर्जी दी हुई थी तो अब हम उसको 10 जूल्स एनर्जी दे देंगे. अब उससे क्या होगा कि नाउ इवन इफ देयर आर लेस चार्जेस फ्लोइंग, दे आर स्टिल डिलीवरिंग द सेम और इवन हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो हम चार्जेस कम कर देते हैं. हम कहते हैं कि पहले आप 10 चार्जेस लेके आ रहे थे, हर एक के पास एक एक जूल था, अब आप एक को ही 10 दे दो और उसे कहो बस तो खेला जा. एंड दैट इज अ गुड वे. दैट इज हाउ वी एक्चुअली ट्रांसपोर्ट स्टफ. आपने ट्रक लोड ऑफ स्टफ भेजना है यहाँ लाहौर से कहीं कराची भेजना है, तो आप ये नहीं कहते कि अच्छा एक ये बैग ले जाओ फिर अगला एक बैग ले जाओ. आप करते हो पकड़ के सारा एक लोड करते हो एक बड़े से ट्रक के अंदर, वो एक ट्रक भेज देते हो सारा सामान लेके. एंड दैट इज स्मार्ट बिकॉज यू आर रिड्यूसिंग द लॉस दैट यू हैव. क्यों? इमेजिन आपने जो ट्रक भेजा है, इट्स गोइंग टू, फॉर सम रीजन एवरी ट्रक जस्ट लूजेस 10% ऑफ द लगेज. ठीक है. तो अगर 10 लोगों का लगेज था और आपने 10 ट्रक्स में भेज दिया
तो सबके लगेज से कुछ ना कुछ गायब हो गया। बट अगर 10 लोगों का लगेज था और आपने एक ट्रक में सारे का सारा डाल दिया, तो देर जस्ट गोइंग टू लूज 10% ऑफ द टोटल लगेज। तो ज्यादा से ज्यादा एक बंदे का लगेज लॉस होगा, बाकियों का नहीं होगा। सो दिस अलाउज अस टू दिस power correction, it allows us to make sure that we reduce the loss that we have for electrical energy while still delivering the required energy to whatever our destination is. So ये जितने भी हमारे grids होते हैं वो इन चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो आप देखोगे कि जितनी बड़ी लाइन है, जितनी ज्यादा दूर वो जाती है, उतनी ज्यादा उसकी वोल्टेज होती है, हाई वोल्टेज होते हैं वो। हाई वोल्टेज के अपने मसले हैं, हाई वोल्टेज पे करंट स्टार्ट्स बिहेविंग इन अ रियली वियर्ड वे और उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इट कैन पीपल लिविंग इन एरियाज दैट हैव हाई voltage grids, they can have skin complications और उनको health issues हो जाते हैं. So all of those things are there, and obviously there's the off chance that it can damage the uh, signals या जो भी communication हो रही है वो भी सारा कुछ उसमें है. So high voltage को deal करना मुश्किल हो सकता है, but compared to having high current, this is still a better way. ठीक है? So high voltage is still a better way of transferring energy from in large quantity from for large distances. So हम high voltage करते हैं, मतलब अभी जो गवादर के लिए वायर उन्होंने लगाई है तरबेला से, this is like the largest voltage project that Pakistan has ever seen. और वो कोशिश करेंगे उसको मतलब insanely 100,000 volts और something, पता नहीं बहुत ज्यादा, बहुत हाई वोल्टेज पे उन वायर्स को लेके जाना है। वो इतनी ज्यादा वोल्टेज है कि उसके लिए हमें हमारा ग्रिड उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तो उसके लिए खंबे नहीं लग रहे हैं, उसके लिए पूरी लाइन नहीं बिछ रही है। एंड दैट्स अमेजिंग बिकॉज इफ यू डू दैट देन पावर लॉसेस आर रिड्यूस्ड बाय अ लॉट। तो आपका स्मार्ट ग्रिड्स भी होते हैं, खैर दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, क्या और क्या क्या कर सकते हो आप। सो those are the two things, resistance and current, they affect loss, and current is the main factor there, main culprit. So you reduce the amount of current that you have and compensate it by increasing the voltage that you have, because power is always voltage times current. तो अगर आप का करंट कम हो रहा है तो वोल्टेज उसी फैक्टर से इंक्रीज कर जाए तो ओवरऑल पावर तो सेम डिलीवर होगी ना. So that is what we do. So resistance comes from the material, or power is obviously related to that. अब आ जाते हैं पोटेंशियल डिवाइडर के ऊपर. पोटेंशियल डिवाइडर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल थिंग. उसमें करते क्या है हम, क्या हम कहते हैं कि वी हैव अ कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस or we have some small resistors connected together. So let's suppose I have this circuit, I am providing this, and I have this resistor here and this resistor here, and for some reason I just want this bulb to turn on. Okay, fair enough. Now this bulb turns on if it gets 0.5 volts, and this battery is of 0.8 volts. इसका मतलब ये होगा कि मुझे ज्यादा वोल्टेज, देखो these are in resistance, these are in series circuit ना, so this is all in series. So what's gonna happen in series, overall voltage is the same, the voltage supplied is the same as voltage used up. So what is using the voltage? This resistor is using the voltage, this resistor is using the voltage, and because these two are in series, parallel, this bulb and that resistor, the voltage of this bulb is the same as the voltage of this resistor. So what do I want? If I want the bulb to turn on at 0.5 volt, I basically want this resistor to have 0.5 volt. अब अगर इस resistor को 0.5 volt देना है और total 0.8 volt मिल रहा है, तो what do I want? I want this to have 0.3 volt. So इसका मतलब ये हुआ कि मैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि वो जो चार्ज आए वो ज्यादा चार्ज जिसको डिलीवर करते हो थोड़ा सा उसको करते हैं, नॉट जस्ट ज्यादा, इन दिस पर्टिकुलर रेशियो. सो आई वांट, इफ आई वर टू टॉक अबाउट परसेंटेजेस, देन आई वांट this many percentages travel, like 5/8, which is a little more than 50%. अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, कर सकते हैं. So 5/8 is 62.5%. So I want 62.5% of the voltage to be given to this. So my bulb turns on. So that's fine.
the rule is, or the principle is, that ratio of voltage is same as ratio of resistance. And that's pretty simple. It's not some rocket science. Basically, what's happening? You know, V is equal to IR, right? So let's suppose I have this circuit and I have V1, which will be equal to I1 R1. And if I talk about the total case, so the V total is I total and R total. All right, so let me divide these two. Let me call this equation number 1. Let me call this equation number 2. And if I try to divide the two equations, I get V1 equals to I1 R1 over V2 equal to V total equals to I total and R total. Now here's the thing. This is series circuit, right? The current that comes out goes through everything here. So it doesn't matter where I'm talking about. The current is still the same. So this I total is the same as I1. So this cancels out. So what am I left with? V1 over V total is the same as R1 over R total. And that's my potentiometer, my potential divider principle. What is it saying? It's saying कि देखो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी ना कंपेयर टू द टोटल, उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी यूज होगी वहां पे कंपेयर टू द टोटल. बात खत्म. So if I want this to have 62.5% of the voltage, just make sure this has 62.5% of the resistance. Simple. So let's suppose if this has a resistance of X, this has a resistance of Y. So how much do I want? So I want X over X plus Y, which is the total resistance, to be equal to 0.5 over total voltage, which is 0.8. अच्छा, ठीक है. अब इसका मतलब क्या हुआ? Try to solve this equation. 0.8x equal to 0.5x plus 0.5y. And that tells me that I have 0.3x over 0.5 equal to y. So I need 3 by 5x. So I want कि जो मेरी y होगा ना, उसकी resistance 3 by 5 of x होगी. And based on that, I can easily figure out कि वो कितनी होगी, कितनी resistance होगी. And based on that, I will easily see कि भाई उसकी रेजिस्टेंस. तो अगर एक की रेजिस्टेंस मैं कहता हूँ 5 ओम है, तो दूसरे की रेजिस्टेंस उसी लिहाज से चेंज हो जाएगी. 62.5% उसका रेजिस्टेंस होनी चाहिए if I want it to have 0.5 volts. So potential divider circuit समझ आया? अच्छा, अब इसको एनालाइज कैसे करते हैं? So let's suppose we have a thermistor. ठीक है, थर्मिस्टर लगा दिया और हमने एक फिक्स रेजिस्टर लगा दिया और हमने एक वोल्टेज बैटरी सोर्स लगा दिए और ये है, और इस थर्मिस्टर के साथ मैंने बल्ब चला दिया. अब ये बल्ब तब ऑन होगा जब थर्मिस्टर को वोल्टेज मिलेगी. थर्मिस्टर को वोल्टेज कब मिलेगी? जब उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी. दैट इज व्हेन इट्स गोइंग टू कन्वर्ट मोर एनर्जी टू नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ना. तो अब यहां पे देखो थर्मिस्टर कब ज्यादा काम करता है, इन कोल्ड वेदर और इन hot weather. When does this have high resistance? So the resistance depends on heat. So in cold temperature or in cold conditions, it has high resistance, and at high temperature, it has low resistance. So when it has high resistance, तो उससे क्या होता है कि this offers a lot of resistance, so there is a lot of voltage that passes through it. So bulb turns on. But when it has a low resistance, तो it is acting like a straight wire. और जब ये वायर की तरह एक्ट करेगा तो उसकी वजह से सारे का सारा करंट डायरेक्टली पास हो जाएगा, बल्ब को कुछ भी नहीं मिलेगा. One way that I used to understand these things when I didn't want to calculate, I just wanted to get an idea of how the circuit was like. What I would do is कि मैं दो एक्सट्रीम केसेस देखता था. मैं कहता था या किसी चीज की रेजिस्टेंस 0 हो गई है या उसकी रेजिस्टेंस इनफिनिट हो गई है. अब जब रेजिस्टेंस 0 हो गई है तो वो शॉर्ट सर्किट हो गया कि वायर में से करंट फ्लो करता जा रहा है, उसको कोई रोक ही नहीं. और जब इनफिनिट हो गई तो तब वो ओपन सर्किट हो गया. सो दिस इज क्लोज सर्किट, दिस इज ओपन सर्किट. ओपन सर्किट में से वायर में से कभी भी बिजली फ्लो कर ही नहीं सकती, और क्लोज सर्किट में ही जाएगी और किसी में जाएगी नहीं. तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे वोल्टेज हो गई 0
कि लॉस ही कोई नहीं है, और यहाँ पे वोल्टेज हो गई बहुत ज्यादा। अच्छा, अब जरा देखना, लेट मी टेक दिस सेम सर्किट एंड break it down using this idea. So let's suppose I have cold temperature. Cold temperature मतलब high resistance. ठीक है, high resistance पे ये ऐसे बनेगा. You have this resistance and it is an open circuit now. तो अब मुझे बताओ, करंट अगर आता है तो किधर से फ्लो करेगा? बल्ब में से जाएगा, और तो कोई उसके बाद रास्ता नहीं है. सो करंट इधर से आएगा, ये लें जी, बल्ब ऑन हो गया, बल्ब को बिजली मिल गई. ठीक है. अच्छा, on the other hand, if it is hot, okay, so battery होगी, and now it's going to act as a short circuit. कोई रेजिस्टेंस दे ही नहीं रहा वो. अब लेट्स सी, अब बल्ब को बिजली मिलेगी. क्यों मिलेगी? करंट इधर से आएगा, वो कहेगा भाई यहाँ पे जाता हूँ तो रेजिस्टेंस है, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं. तो कहता मैं पागल हूँ तो जाऊँ, इधर से गुजर के चलता. बल्ब को कोई बिजली नहीं मिलती, सो बल्ब स्टेज ऑफ, यहाँ पे इट्स ऑन. सो पोटेंशियोमीटर को अगर, पोटेंशियल डिवाइडर को अगर आपने देखना है, सो the main principle that you have to remember is that the ratio of voltages is same as ratio of resistance. But अगर आप उसको शॉर्टकट के थ्रू देखना चाहते हो कि अच्छा सर्किट को डायरेक्ट एनालाइज करना है, तो आप ये ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट की एग्जांपल ले सकते हो. ओपन सर्किट में बिजली फ्लो नहीं करती, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और शॉर्ट सर्किट में बिजली उसी में से फ्लो करती है क्योंकि उसकी वोल्टेज जीरो है और उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है. So that's the idea here. Let's analyze another circuit. Let's suppose I want to turn on the heater. बल्कि छोड़ो, मैंने एक street lamp बनाना है, and I want it to turn on when it is dark. Okay, so I want it to turn on when it's dark, and I have a resistor here, and LDR here. LDR is basically a resistor that depends on light. अच्छा, where should I put the bulb? मुझे बताओ. लेट्स सपोज यहाँ पे बल्ब लगा देता हूँ और एक यहाँ पे बल्ब लगा देता हूँ. दिस इज बल्ब 1, so this is lamp 1, this is lamp 2. Tell me which lamp turns on when it is dark? Bulb 2. So when it is dark, what happens? Let's analyze it. You're right, because when it is dark, current comes in and this has a very high resistance over there. So it prefers this path. तो इसमें से गुजर जाता है. By the way, लैंप 1 अभी भी ऑन होगा, लेकिन उतना ऑन नहीं होगा, वो डिम होगा, क्योंकि ज्यादा पोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस इज बीइंग ऑफर्ड हियर. तो ज्यादा ब्राइटनेस भी इसी की होगी क्योंकि इसको ज्यादा करंट मिल रहा होगा. When it is like light is coming in, then this bulb, then this is acting as a short circuit. This is a short circuit. इसमें से वो गुजर जाएगा और इसकी ज्यादा ब्राइटनेस होगी क्योंकि इसको अभी भी उतना ही मिल रहा है जितना उसको मिल रहा है. So ज्यादा portion of resistance is coming on the top वाला resistor. So ज्यादा portion of current भी L1 को मिलेगा. So when it is daylight, L1 will be brighter. When it is night, L2 will be brighter. Does that make sense? So that's the idea of potential divider. We have talked about power. अच्छा, पावर को मेजर कैसे करते हैं? पावर को बेसिकली मेजर करते हैं in terms of kilowatt hour. So just some comment on how we get that. So when you're talking about एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और घर का जो बिजली का बिल आता है, वो पावर का नहीं आता. इट डजंट मैटर कि आपने पर यूनिट कितनी एनर्जी, पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी मंगवाई. What it basically depends on is the overall energy that you consumed. It's not power, it's the energy. So हम एनर्जी को P times T कहते हैं. Okay, पावर क्या होती है? V into I into T. And that is how we know what your total bill is going to be. So we are going to compare kilowatts, basically the power, with time, with hour. कि एक घंटे में अगर आप ये चीज इस तरह चलाएंगे तो कितनी एनर्जी यूज होगी. So kilowatt hours is what we check our power in or energy in. ठीक है. अच्छा, अब सर्किट्स को हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि ओवरऑल पावर कम से कम लगे. लेकिन पावर कैसे कम लगेगी? कि हम लॉस को कम करते हैं, हम पावर लॉस को कम करते हैं, और ऑब्वियसली वी पे फॉर व्हाटएवर यूनिट्स वी यूज. 1 यूनिट क्या है? 1 यूनिट क्या होता है कि 1 किलोवाट अगर आप 1 घंटे के लिए चलाओ, सो दैट इज बेसिकली योर यूनिट. तो यूनिट की अमाउंट हमें पता होती है कि अच्छा इस तरह से उसने चलना है, और उसको देख के हम चला लेते हैं उन चीज़ों को. एंड दैट सम्स अप द idea of electricity and circuits and all that.